What you're seeing are glimpses of one of the most vulnerable sections of our society, the elderly. Little is understood of the unique problems of loneliness, of neglect, of isolation, and often crushing poverty. The elderly in our country, that is those over 60 years of age, are expected to reach 326 million by 2050. Behind these numbers, however, there's a story of the enormous challenges that face the elderly. 75% of the elderly reside in rural areas, 33% are below the poverty line, and 90% of them are from the unorganized sector, unable to access even their basic needs. Poverty makes the situation even worse. HelpAge India, an NGO, is working across India to meet this huge challenge by reaching out to the weakest and the most vulnerable. Supporting destitute elderly is one of the oldest initiatives in social protection and one of the first to address the problems of the elderly in terms of their economic insecurity. This program provides them basic sustenance and allows them to live a life of independence with self-respect within their family and community. ये आज के दिन जो हेल्पेज इंडिया के तरफ से हम प्रति माह इन लोगों को 10 किलो आटा, आधा किलो चीनी, 100 ग्राम चाय पत्ती, आधा किलो कपड़ा धोने वाला साबुन, 5 किलो चावल इस रूप में हम इनको प्रति माह रूप में देते हैं। प्रति माह इनको पॉकेट मनी के रूप में 100 रुपया और मेडिसिन के लिए 50 रुपया, ये पैसा इनको प्रति 3 महीने में 450 रुपया इनका हाथ में दिया जाता है। पूरे हमारे हिंदुस्तान में ये एक आश्रम मिलेगा। इस कुष्ठ आश्रम में कोई व्यक्ति भिक्षावृत्ति नहीं करते। हमारे यहाँ पे हथकरघा है, हथकरघा में काम कर सकते हैं, गौशाला है। It has run in partnership with over 200 other NGOs in 146 districts covering 25 states. इस आश्रम के जितने भी बुजुर्ग हैं, करीब 80 लोग हैं, ये सभी लोगों को हम लोग रोड से उठा कर ले आए, रेलवे स्टेशन से ले आए, हॉस्पिटल से ले आए। ये सभी के सभी 99% कह सकते हैं इनकी मेमोरी लॉस है। ये लोग अल्जाइमर्स डिमेंशिया के पेशेंट हैं। उनको बड़ा प्रेम से प्यार से रखा जाता है। फिजियोथेरेपी बुजुर्गों के लिए बहुत ज़रूरी होता है और हेल्पेज हमारी इसमें मदद कर रहा है। ये जो है यहाँ पर फिजियोथेरेपी यूनिट हेल्पेज की मदद से लगी हुई है। डॉक्टर्स भी आते हैं, ये लोग यहाँ फिजियोथेरेपी करते हैं इन बुजुर्गों की और उससे काफ़ी फायदा हुआ है। Old age homes receive support through various routes, whether providing them with basic amenities, constructing new wings, or as more recently through training of caregivers and the HelpAge physiotherapy program. हाथ को ऐसे रखिए इसके साथ और बाहर लाइए। अब ये तो ठीक है, ये करते रहना है। यहाँ पे पिल्लो रखने हैं 2 इधर, फिर पैरों को ऐसे ऐसे करना है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। In many homes, the residents also receive regular health checkups through the weekly visits of the HelpAge Mobile Medicare Unit Service. HelpAge supports daycare centers that offer the elderly spiritual and physical engagement. It also supports activity that help the elderly maintain active lives through learning of new skills. I have been serving in HelpAge India for the last 33 years. I really enjoy working with these elders. Elders have a lot of issues like economic, physical, psychological and health issues. We in HelpAge, we address all these issues. Our mobile Medicare unit all over the country, it is reaching to the elders who otherwise cannot reach the hospital. We are so thankful to many of the corporates in India which are supporting us with this particular project. The Mobile Medicare Unit or MMU program has been recognized in 2008 as the largest mobile healthcare network for elderly in Asia. More than 70 MMUs provide basic healthcare across India. It is one program that has endeared itself to many corporates.
More and more are coming forward to help in expanding the MMU fleet, enabling basic healthcare to reach the doorsteps of the needy elderly. गाड़ी आने से हमें सुविधा है, हमारे पास में पैसा नहीं है, हमें यहाँ दवाई मिलती हैं, फ्री में मिलती हैं, हमें खूब फायदा है। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज़्यादा हैं कम, जहाँ देखो वहाँ है भरम ही भरम। मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। For the want of a simple surgery, many elderly are unable to see, making them dependent on others for the simplest of needs. HelpAge Eye camps serve to identify patients with cataract. These are followed by thousands of cataract surgeries, all conducted free of cost through the year. HelpAge helpline centres in towns and cities across India offer the elderly an opportunity to get their voices heard. Hello, good morning, HelpAge helpline. These elder helplines attend to such problems as isolation, neglect, abuse, facilitate emergency responses, provide information on access to various schemes for the elderly. They also connect with government, police and referral, rescue and relief services. HelpAge is now changing focus from welfare to development. It encourages a policy of active aging by partnering with senior citizen associations to address their own needs. Holding health awareness camps for the elderly form an integral part of such a partnership. लल्लू बर्गर खा रहा है, आलू के चिप्स खा रहा है। मैं हार्ट का राक्षस हूँ, मैं हार्ट का राक्षस हूँ। नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ इज हार्ट डिजीज। 2 बीमारियां, डायबिटीज और कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। हम दुनिया की राजधानी है, हम वर्ल्ड कैपिटल है, नंबर 1 है। हेल्पेज इंडिया द्वारा आयोजित जितने सारे प्रोग्राम होते हैं, फंक्शंस होता है, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। फिलहाल द्वारका में 5 जगह मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, जो उन्हीं के कोलैबोरेशन से है और इसमें उन सबों का हर तरह का सपोर्ट हमें मिल रहा है। हेल्पेज इंडिया के माध्यम से हम पिछले 1.5 बरस से काफ़ी हेल्थ कैंप्स NCR रीजन में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें हम हेल्थ टॉक और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप लोगों तक पहुंचाते हैं। More than 70 corporates, thousands of individual donors and school children have become a part of the HelpAge family. In this process, they have worked to further the belief that though aging is inevitable, the lives of the elderly must be lived with full dignity.